नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद, मेरे साथ विजय। वी आर बैक विद सम न्यू एपिसोड फॉर जून एक्सपायरी वीक। अगर आपको याद, पहले बिफोर मी गोइंग ऑन ए ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, ऐसा ट्वीट भी किया था मैंने। तो क्लियरली हमने कहा था कि पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू लो कैन बी सीन इन जून, एंड 116,400 goes away. There was a high probability of 15,500 500 to get tested. एंड पिछले 2 वीक्स के अंदर ये पूरा गेम हो चुका है निफ्टी में। 16,400 भी ब्रेक हुआ, 15,400 भी ब्रेक हुआ। इट वॉज अ क्लीन 1,000 पॉइंट मूव। अब जिसने भी वीडियो देखा हो, प्लान किया हो ट्रेड, उनको एडवांटेज डेफिनेटली मिला है। अब नीचे के एक बार के टारगेट्स तो कंप्लीट हुए, अब आगे क्या लगता है? 15,000 राउंड नंबर बचेगा या जाएगा? स्पेशली एक्सपायरी वीक सामने है, एंड फ्राइडे देयर वाज अ बम्पर मूव अपसाइड में। उसके चलते हुए टिकेगा या मतलब 16,000 क्रॉस कर जाएगा निफ्टी, या 15,000 जाएगा? देखते हैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं फॉर एक्सपायरी वीक एंड मूव लिटिल अहेड। ओवर टू यू विजय। थैंक्स आनंद। लाइक ऑलवेज बिग पिक्चर से शुरू करता हूँ। प्राइस केम वेरी क्लोज टू द बिग राउंड नंबर ऑफ 15,000, जो लो था 15,183। सो 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स वेरिएंस किसी भी तरफ हो सकता था। It would have made a new, like a low below 15,000 also by about 150 points. ऊपर भी हो सकता था, अभी के लिए तो ऊपर ही है। The other thing to notice, अभी ये महीना खत्म नहीं हुआ है, but on a monthly scale also, price is trying to climb back, to close above the 20-month moving average. अभी 20-month moving average 15,962 है, so around 200-250 पॉइंट दूरी पर है। So क्या इस मंथ एंड तक वहां जब ऊपर जाके क्लोज करेगा, we'll have to see. Coming to the weekly scale, ये जो थिक रेड लाइन है, ये मार्च का लो था, अप्रोक्सीमेटली 15,670, राइट। यहाँ पे बहुत बड़ा बाउंस लेके ऊपर गया था, इट केम बैक अगेन, यहाँ से ऊपर बाउंस कर गया था, एंड दिस टाइम इट ब्रोक इट एंड विद अ ह्यूज गैप। ठीक है, तो इसको ब्रीच करने का काम जो है वो हो गया है। एंड द अदर थिंग टू नोटिस, this is a study that I started doing only yesterday, because I wanted to see कि जो सिमिलर फॉल्स मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो यहाँ पे हुए थे 2015 और 2010 में, I just wanted to see कि इन सबसे फिबोनाची एक्सटेंशंस कहाँ तक पहुंचे हैं। तो अगर इस WXY को एक करेक्टिव माने और उसके बाद ये एक्स वेव है, तो इस लेंथ का ऑलमोस्ट 100% हम खत्म कर चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या, एग्जैक्टली 100%, 15,180। सो इन अ वे दिस करेक्टिव इज इक्वल टू दिस करेक्टिव। अगर सिंपल टर्म्स में देखना चाहे तो अगर हम इसको ABC को एक करेक्शन माने, तो ये एक और ABC यहाँ पे खत्म हो गया है। पहले क्या हुआ था, लेट्स गो बैक एंड सी। मार्च 2015 में भी ऐसे ही हुआ था, ये देखिए ऑलमोस्ट इक्वालिटी, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया, बट उस टाइम में ये 200 वीक मूविंग एवरेज वाज अ बिग सपोर्ट। 2010 में क्या हुआ, 2010 में थोड़ा वेव फॉर्मेशन अलग किस्म का है। सो 2010 में 61.8% ही हुआ था, क्योंकि ये बहुत डीप था। W leg was very deep and then even the Y leg was very deep। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट, यहाँ पे ब्रीच जरूर हुआ 2-3 हफ्ते के लिए, बट अगेन वहीं पे सपोर्ट मिला है। तो दो हिस्टोरिक एग्जांपल्स में, एक में इक्वालिटी ही था 100% और एक में
नहीं था। तो इस बार क्या होगा, very tough to say, but we've already attained equality. So maybe a big bottom is made, maybe. The only difference that I see is 200 week moving average में भी बहुत दूर है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये 13,300 के आसपास है, 13,200 in fact. But in the earlier two cases, price met 200 week moving average. तो इस बार क्या होगा, will it again come back to the moving average? I don't know, very hard to say. But एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन खत्म होता हुआ दिख रहा है, एंड अगर मैं डेली स्केल पे जाता हूँ तो वेव काउंट मोर और लेस पूरा दिखता है। अगर ये पूरा एक ए था तो ये बी था, तो सी के अंदर भी हमें रफली 1 2 3 4 5 पूरे दिखते हैं। ऑल्सो दिस जोन इज एग्जैक्टली द प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन, राइट, and very close to this consolidation zone also. एक strong support area जरूर है। तो अगर मैं down the scale hourly में जाके देखता हूँ, तो भी काउंट पूरा दिखता है 1 2 3 4 5, राइट। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि ये 1 2 ये 3 यहाँ खत्म नहीं हुआ हो सकता है 3 यहाँ खत्म हुआ है, राइट, वेयर 3 इज अ मच लॉन्गर वेव, क्योंकि अभी 3 काफी छोटा दिख रहा है। अगर ये लेता हूँ तो इट इज पॉसिबल दैट वी आर स्टिल इन अ फोर्थ, वेयर दिस ए बी सी, या तो फोर्थ खत्म हो गया या एक राइजिंग ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी मे बी डी एंड ई, ये एक पॉसिबिलिटी है। ऑल्सो देयर इज अ ह्यूज प्राइस गैप हियर। Also, one thing, Vijay, if we are considering this as a major wave for to get completed, then the reversal has to be the faster in at least in the last leg. Yani if we consider the 4 where we have marked already around the 850, then we are yet to cross it in a less than equal time. Forget about lesser time. Correct. 1 2 3 4 5 6 days हो गए। 6 दिन में भी पार नहीं कर पाए। that what I doubt कि यार ये fourth का final leg हो चुका है। There is a possibility of one kick downside and then reversal. Yes, that possibility is there, as long as we don't go into this gap area. Yeah, and it can also be a fifth failure because third has been long enough. Almost 1200 1300 points का ये third अगर consider करते where you have marked as C lower side में, then in such a case fifth can become as a failure, no? हाँ, correct. ये हो सकता है बिल्कुल, फिफ्थ फेलियर भी हो सकता है बिल्कुल। And which is typical when we are looking for a major reversal. Correct. ये 1300 पॉइंट का था। यहाँ से यहाँ तक। Internal में 1300 point is huge. So fifth can become failure, and then we may see a faster reversal or expiry week है। Yes. Specifically June 30 is the expiry day, quarterly closing, monthly closing, calendar half year closing, सब एक ही दिन है। सब एक ही दिन है। So there can be some hi-fi drama for the next. What also needs to be noted, Anand, is once we broke the March lows, 6 दिन लगे प्राइस को वापस उस लेवल के ऊपर आने में, ठीक है। So that is one important. The other very important thing is बैंक निफ्टी ने मार्च लो नहीं तोड़ा। ये it has been a strongest. Bank Nifty has been strongest, even autos have been strongest. 32,155 ये लेवल बैंक निफ्टी नहीं तोड़ा। So one way to look at it is कि this is intermarket divergence, where the bank nifty is trying to tell you कि अब हम लीड करेंगे ऊपर। Exactly. क्योंकि इससे पहले while bank nifty was correcting, there was auto shooting up, there was also metals shooting up before metals really started correcting, right?
बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, करेक्ट कर रहा था बट बाउंस बैक कर रहा था, एंड इट केप्ट एवरीवन गेसिंग, बट इसने मार्च लो बिल्कुल ब्रेक नहीं किया। सो ये एक चीज हमें देखना पड़ेगा। एंड बैंक निफ्टी में भी एक ये ह्यूज गैप एरिया है अबाउट 33,774। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता we can assume कि maybe it has one more leg down to complete, possible. Longer picture में भी अगर देखें तो 31,500 is the big round number. 32,290 तक आया था ये, तो 600 पॉइंट से रह गया था। But again here also the correction definitely looks more or less complete. So if banks start running up, we should keep an eye on the banks. Then because क्योंकि इनका weightage भी ज़्यादा है निफ्टी में, banks and financials का, right? So before I hand it over to you, I just want us to pay attention to one stock, HDFC Bank. ठीक है, ये बैंक निफ्टी में बाप है। तो ये जो 1305 which is multi-year support point in a way, क्योंकि ये थर्ड वेव का टॉप था और उसके बाद प्राइस ने आके 3 महीने ट्राई किया है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तीनों बार इंट्राडे जरूर पियर्स हुआ है, बट दिस लेवल हेल्ड. So if that level is really important, it is possible कि HDFC बैंक ने बहुत बड़ा इम्पल्स खत्म किया था, उसके बाद ये पूरा ABC करेक्शन था जो खत्म हो गया, which is shallow, right? And then as long as 1305 is holding, maybe it will start moving up. And अगर HDFC बैंक रैली करता है तो बैंक निफ्टी को ऊपर खींचेगा. Interesting. Even if you look at volumes, yes, there were huge volumes. Of course, इस में थे volumes. ये जो ऊपर खींच के लेकर गए मर्जर न्यूज के आसपास. Yeah. Right. So इनके ऊपर क्लाइम करना एक टास्क होगा. But this thing is holding. अगर ये 1305 के नीचे क्लोजिंग देता है मंथली स्केल पे, तो फिर तो मैं सोचूंगा कि ये एक मल्टी ईयर करेक्शन में जा रहा है. Then we'll have to see कि बैंक निफ्टी को लीड कौन करेगा, because HDFC और HDFC बैंक मर्ज भी होने वाले हैं, तो एक सिंगल स्टॉक बन जाएगा, इसका वेटेज और बढ़ जाएगा. तो ये जिस तरफ खींचेगा उस तरफ बैंक निफ्टी खींचेगा. एंड आई थिंक बैंक निफ्टी अगर खींच रहा है तो हो सकता है निफ्टी भी स्लोली टर्न अराउंड करे. दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग. सो just going back to the Nifty chart, जो लास्ट वीक ट्रेडिंग रेंज जो बताया था 15,900 के और 15,100 के बीच में ही मार्केट रहेगा, बिल्कुल वैसा ही रहा अभी तक. आई थिंक ऑन ईदर साइड देयर इज अ ह्यूज ट्रेड वेटिंग टू हैपन. अगर नीचे जाता है और 15,200 तोड़ता है तो भी बहुत बड़ा ट्रेड होगा, और अगर 15,900 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो भी बहुत बड़ा ट्रेड होगा. Technically, even if we assume that there is still a complex correction going on, technically this rally can go all the way to this red line or even up to this falling trend line, but only upon reversal above 15,900 and at least a daily closing there. Over to you, Anand. Thank you, Vijay. So here is the Nifty chart. This is the daily chart. Futures? Yeah, this is Nifty future. As दबंग ने ऑलरेडी बहुत कुछ डिटेल में अपने को समझा दिया है, सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, और ऑलरेडी सेम चीज़ रिपीट हो रहा है सिंस कपल ऑफ वीडियोस बैक, उसके पहले भी. एंड दोज हु हैव बीन फॉलोइंग ऑल द वीडियोस सिंस जनवरी, we have been quite bang on with respect to our views that
market is in a correction, and we may be looking for the targets of around 14,200, 300 at most, which was the previous wave 4 as per Elliott wave, as well as per price range break. So अभी तो हम 15,100 से पलटे हैं, sorry, 15,200 we can say approximate. Now coming back to the levels for the coming week, interesting is, before that, one thing I need to highlight, these volumes. ये जो वॉल्यूम और रेड कैंडल जो है, यानी यूएस फेड के डिसीजन के बाद जो आए थे, these have been highest since March ना? या मार्च में जब वॉल्यूम्स आए थे, ऑब्जर्व दिस थिंग, देयर वाज अ इमीडिएट रिवर्सल, वन साइड मूव, यानी कि दिस वाज द लास्ट वॉल्यूम जहाँ पे सबको ट्रैप करके आउट कर दिया मार्केट ने, देन टेक ऑफ ले लिया है. नाउ कंपेयर इट विद प्रेजेंट वॉल्यूम, इसके नीचे मार्केट ने 2 दिन सस्टेन किया इसके लो के नीचे, और उसके बाद अभी तक उसके हाई को क्रॉस नहीं किया है. इट्स ऑलमोस्ट 6 days completed. What does this tell me is, this does not look like a false breakdown as of now. अगर ये false breakdown होता तो मार्केट इतने इन टाइम पास नहीं करता. So possibility of there can be one more kick downside. Now the kick can be all the way till 15,100, 200, और इसके नीचे भी जा सकता है. Breaking of this range taking us all the way till 14,800, 900, and then we may see a reversal. If there has to be a reversal, this is one possibility. One more thing is, this downside may take it all the way towards our potential target of fourth wave near 14,200, 300 zone. यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दे स्लो एंड स्टडी मूव जाके. एक किक डाउन यानी वन डे में नहीं आएगा, टू बी क्लियर. अब वन डे में आ भी जाए तो दैट्स वेल एंड गुड, बट मार्केट, what does we know in a market is, we know likely destination. The path of travel is well decided by the market. It is best not to be anticipated in advance. ये एग्जैक्ट ऐसा ही जाएगा, मैं पोजीशन बना लूंगा कि 4 दिन में 14,200 जाएगा, ऐसी गलती मत कीजिए. पाथ मार्केट को डिसाइड करने दीजिए. So what will my trade here will be is, if I get a trade around 15,800, 850 zone, I will look for a short with a stop of 15,900 and look for the target of this lows around 15,200, and if this breaks, then next target triggers. This would be my typical preferred trade for the coming week. As I said, not to be forget, expiry week is going to be some high volatile possibility because of June 30 being quarter ending, half year ending, month ending, as well as expiry ending. And this was the longest expiry. Also, please note, June 30 option contracts have been inactive since at least an year, and the contracts have opened for a trade since 3 years. ये half yearly, quarterly contracts 3 years पहले निफ्टी के 3 years पहले स्टार्ट हो जाते हैं, and active 6 month पहले से आपको active दिखेंगे, mostly because of some position building of hedge, you can say, by the biggies. So ignoring all this, अपने को सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम पे ध्यान रखना है. प्राइस और वॉल्यूम क्या कह रहा है, 15,900 के ऊपर सस्टेन करता है, then look for the target of this gap fill, which is around 16,200, and then it can go all the way till 16,600, 700. And until 15,900 is not captured back, these sellers will get active again and they may take it lower. So be prepared. There is a possibility of one big trade opportunity here, as Vijay has already mentioned. Now we may get a big trade downside or upside, depend on the level. So low risk, high reward opportunity सामने आने वाला है, not to be missed. And my preferred trade will be on a downside. Look for a downside, because the historical pattern, whenever we see such high volumes, it has been observed that या तो रिवर्सल आता है, वो हाई वॉल्यूम फॉल्स मूव के रहते हैं, तो ट्रैपिंग वॉल्यूम रहते हैं, तो रिवर्सल इमीडिएट आ जाना चाहिए था.
जो ऑलरेडी 6 डेज हो चुके हैं अभी तक आए नहीं है. So possibility this present move is just a pullback cool off move after these volumes and then और हो सकता है क्योंकि ये एक्सपायरी वीक के पहले का वीक था दल, हो सकता है दिस वाज पोजीशन साइज एडजस्टमेंट वाला मूव and then the real move can trigger again. So all in all, buyers remain on a downside until 5900 is not crossed, and don't be surprised to see 15,000 get tested within June expiry if 5900 is not captured. A 95% probability I would be giving 15,000 to get tested in June expiry, यानी कि अगले 4 दिन में अगर 15,900 क्रॉस नहीं करता है. रिमेंबर दिस. सो एक्सेलेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपके सामने है. और बाकी फ्रेश व्यू फॉर द जुलाई वीक, जुलाई सीरीज क्या हम नेक्स्ट वीक लेके आएंगे. अभी के लिए इतना ही. एक वीकली चार्ट पे एक नजर अगर डालते हो, स्पेसिफिकली मंथली चार्ट, लेट अस लुक एट समथिंग इंटरेस्टिंग ओवर हियर. as have been mentioned in couple of weeks before, यानी मई के वीडियो में कहा था 16,200-300 के नीचे निफ्टी कंटिन्यूसली 3 अटेम्प्ट में क्लोज नहीं दिया है. मे बेबी उसके नीचे जाके रिवर्स मार लिया था. दिस इज अ जून सीरीज, जून मंथ, दोनों का क्लोजिंग जून 30 को आने वाला है और ऑलरेडी मार्केट इज वेल बिलो 16,200 300 ये जो लेवल था. एंड इफ एट ऑल बुल्स नीड टू डिफेंड दिस अगेन, ये ब्रेकडाउन बचाना है उनको. सो इवन इन दैट केस 15,900 के ऊपर आपको एक बड़ा तेजी का चांस मिलेगा. यानी मंथली चार्ट भी वही दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ बिग मूव. एंड इफ दिस इज अ ब्रेकडाउन देन गेट रेडी फॉर दिस टारगेट्स ऑफ अराउंड 14,200 300 गोइंग अहेड. हो सकता है इमीडिएट ना आए, बट फॉर नाउ आई वुड बेट ऑन 15,000 ब्रेक. सो अगर आपको लेवल कुछ याद रखना हो तो क्या है, सिंपल टर्म्स में 15,900, 15,900 ऑन अपसाइड एंड 15,600 फ्राइडेज लोज ऑन अ डाउन साइड. समझो अगर 800 तक नहीं जा रहा है आपको रिस्क ज्यादा शॉर्ट मारने का, तो क्या करोगे, जैसे ही 15,600 ब्रेक होता है, मार्केट 5 मिनट सस्टेन करता है, हैव ए स्टॉप लॉस ऑफ 15,750 एंड लुक फॉर गो शॉर्ट, लुक फॉर द टारगेट्स ऑफ अराउंड 15,300 15,000 15,100 15,000 लेवल्स. यानी कि 15,000 का जो टारगेट है उसको आप टारगेट कंसिडर करके चलिए. 15,600 गिव्स अवे. Broadly speaking, you have a stop loss of 150 points any side and look for a target of around 500 to 600 points. Excellent trade opportunity not to be missed. बाकी डिटेल फॉर जुलाई सीरीज एंड गोइंग अहेड, वेव कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, फोर्थ खत्म हुआ है, बॉटम डन है नहीं है, वी लुक इन अ जुलाई सीरीज अपडेट. टिल देन प्लीज लाइक, प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड प्लीज कीप फॉलोइंग फॉर अ बेटर रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज अहेड. ऑलरेडी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी विजय ने शेयर किया है आपके साथ, लो रिस्क अपॉर्चुनिटी उसमें भी है, नॉट टू बी मिस्ड. ध्यान लगाइए, एंजॉय कीजिए ट्रेड में. और वीडियो हमारा अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए. अच्छा नहीं लग रहा है तो फीडबैक दीजिए इम्प्रूव करने का. डू कमेंट, वी अप्रिशिएट योर फीडबैक. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. See you guys on the next video.